Hello. Hi. Good evening. Welcome to AcuCheck Wellthy. Hello, Dr. Arvind. Welcome to AcuCheck Wellthy. Today's webinar is really special. We would love your maximum participation in today's session. Let's wait for all our AcuCheck Wellthy family and then we'll start. Hello, good evening. Yes, Arvindji, what is your plan for Diwali? I hope you're not on any kind of diet and you're going to have a lot of sweets, lot of savory items, but in a healthy manner. Hello, Chakravarti sir. Good evening. How are you? Happy Diwali. Happy Diwali. Awesome. Share what are your plans this Diwali? What is it that you're going to celebrate? What are the things you have planned, especially with your family, friends, relatives, kids, whoever around? We would love to know what are your plans. Thank you so much from our entire AcuCheck Wealthy team. Looking forward to sharing a lot of Diwali based information in today's session. Let's wait for our entire AcuCheck Wealthy members and we'll start. Yes, we'll wait for another 2 minutes so that our entire AcuCheck Wealthy family comes along and listens to this amazing topic of today, having desserts in a diabetes friendly manner with our special guest. Hello, Mr. Deepak. Happy Diwali. Thank you so much for joining the Diwali special session. I hope you have a lot of celebrations planned for this week along with your family, friends. We would love to know from your health coaches what is your plan for this week and what is it that we are going to do, especially to have a happy and a fun filled Diwali. Hello, Deepak ji. Happy Diwali. Let's wait for our entire AcuCheck Wealthy team and our family and we'll start. Let's wait for another 2 minutes and then we can have a great session with today's motivator. Hello, Terkhedkar ji. Happy Diwali. Thank you so much for joining today's session. I am very happy to see our regular users even in the Diwali season. Thank you so much of love, warmth, and happiness from all our AcuCheck Wealthy family. Can't be more grateful. Thank you. Happy Diwali to you once again. Let's wait for our family, our AcuCheck Wealthy members, and then we can start.
I hope you are taking care of your health this Diwali and going to have lot of fun with your kids, grandkids, family, friends, everyone around. Happy Diwali and thank you for joining today's session. Yes, let's wait for our AccuCheck family and then we can start. Hello, Nayan. Happy Diwali. Thank you so much for joining today's session. It's been great to know that you still enjoy our webinar sessions even in the festive season. Thank you so much for being so punctual with the session. Yes, so the wait is over, and we are here with the special guest for today. We have Meenal Kataria, our diabetes educator, nutrition specialist, and an in house support team member with an experience of more than 8 to 10 years in the field of nutrition and dietetics. Somebody who's involved deeply in getting the information which you see in the application. Created, utilized, and planned for all our users. She is going to share with us today how to make desserts specifically which are homemade from outside, diabetes friendly, so that all of us can enjoy a hearty and a healthy Diwali. Welcome, Meenal, on behalf of the entire AccuCheck Wealthy family. Thank you so much for getting some time out for us in this festive season. Over to you, Meenal. Thank you, Vrituja. First of all, I would say and highly appreciate everyone for coming on this auspicious day. I know everyone has to do this puja, everything has to go on time. So we'll quickly start with this, and I'll appreciate and give a thanks to everyone for coming. Now starting with this, अभी दिवाली है और स्वीट्स नहीं खाए तो वो घर पे पूरा ये एक एनवायरमेंट बन जाता है कि डायबिटीज है और स्वीट्स खा रहे हो आप, तो एवरीवन ट्राइज टू हाइड योर स्वीट्स। किस किस ने ये फेस किया है? जो आपके घर पे जो बच्चे रहते हैं वो आपको दिवाली की स्वीट्स खाने के लिए मना कर देते हैं और दे गिव यू कि भाई आपको आधा ही मिलेगा, शुगर बढ़ जाएगी, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, ऐसा डराते हैं और दे डोंट गिव यू स्वीट्स। Who all have faced this kind of situation at our home? Please जल्दी से जल्दी मेरे को chat पे लिखिए। Yes, most of us, हर घर की कहानी यही कहती है कि अगर डायबिटीज है तो मीठा नहीं खाना है। उसका कोई सॉल्यूशन कोई नहीं देता, राइट? टाइप यस इन द चैट बॉक्स। और मीठा ऐसा है कि एवरी फेस्टिवल सीजन्स में अपन भगवान को, आई मीन वी गिव इट टू द गॉड, वी गिव इट टू एक रिफ्रेशमेंट की जैसे भी वी सर्व एज पर। हर एक फेस्टिवल सीजन में तो स्वीट होना इज दी मस्ट। और बेचारा अगर जिसको डायबिटीज हो जाता है एंड देन दे आर फील वेरी पिटी कि भाई अभी डायबिटीज हो गया, आई हैव टू कॉम्प्रोमाइज, आई हैव टू give up all my sweet cravings and I end up to like कि वो दिवाली के दिन घर पे बहस नहीं हो, फाइट नहीं हो, and on that वो डर के मारे they don't eat. Okay, so अभी उसके लिए what we have to do it a healthy way से अपन कैसे we can change it. Okay, so now India with its rich heritage and diversified culture also varies a great deal in sweet preparation.
सबके घर पे अलग तरीके से प्रिपरेशन ऑफ द स्वीट्स बनती है. साउथ इंडियन पीपल रहेंगे तो उनके घर पे अलग बनती है. फिर पंजाबी के घर पे अलग स्वीट होती है. तो अपना जो इंडिया है, वी हैव अ ह्यूज कल्चर, और every festival seasons we have different type of sweets, we have different type of preparations, we have their own desi preparation kind of, which are used traditional to traditional in our family, in our rituals, in our customs, in the traditions. So how we can use. Okay, now sweets are either prepared at home or eaten out, and not limited to any one occasion. So at every occasions, घर पे खुशी आए, I mean if there is a happiness, हम sweet distribute करेंगे. घर पे नया मेहमान आते हैं, we distribute the sweets. घर आज कोई festivals है, we prepare the sweets or we order it from outside. But overall, हर party में, हर lunch dinner में, every invitations, birthday, festival, anniversaries, general, कुछ भी हो, आज कुछ मूड खराब है, चलो एक स्वीट खा ले. सो स्वीट इज लाइक द किंग ऑफ ऑल आवर इंडियन डिशेस में, राइट? नाउ हियर आर द मोस्ट कॉमन प्रिपरेशंस that are region specific but not limited to it. Now अगर अपन देख, if we see on the extreme upper side, on the extreme north side, जहाँ पे खीर, गुलाब जामुन, कुल्फी, हलवा, सूजी का और गाजर का और दूधी का और माही. So these are the traditional sweets that are prepared in terms of the North India. Coming to the South Indian में पायसम, स्वीट पोंगल, लड्डू, वो एक्सट्रीम घर घर में बनता है. On a day to day basis भी बोल सकते हैं, on a very day to day in the terms of festival seasons में बहुत ज्यादा बनता है. On coming to the west side, it's rasgulla, mishti dohi, firni, sandesh, rasmalai. On east पे बेसन लड्डूस, श्रीखंड. So ये एक common है. But whereas when we stay in a mixed culture, university diversity of India, or we specifically say in the Maharashtra or any of the state now in India, you get to get all kind of sweets. Okay, so have you ever thought कि ये सारे sweets अपने को मिलते हैं, इसके basic ingredients क्या आते हैं? ठीक है, irrespective of the region one belongs to, the main ingredients that are used in the preparation are grains, sugar, milk, fats and oils. Now अभी ये इसका जो साइड इफेक्ट्स कैसा होता है आपकी बॉडी में, फर्स्ट विल ट्राई टू अंडरस्टैंड दैट कि हाउ दिस मेजर इंग्रेडिएंट्स, वन इज शुगर, अदर इज मिल्क एंड थर्ड इज फैट्स एंड ऑयल्स, ये आपकी बॉडी में कैसे इम्पैक्ट करते हैं. कैन एनीवन टेल मी इन अ चैट बॉक्स कि हाउ आर दे इम्पैक्टिंग in your body if you consume this in a proportion, or even if you don't consume in like 5 to 6 pieces of kaju katri apne kha liya, so what is the drawback that is going to affect it? Please fatafat chat mein likho what can be the drawback of this main ingredients. Yes, your sugar level will surge immediately. Then और क्या क्या हो सकता है? ये तो शुगर का हो गया. मिल्क, फैट्स, ऑयल्स, इसके क्या ड्रॉबैक्स हो सकते हैं? Come on, fast, fast, fast. No problem. Milk fat also increase cholesterol. Yes, very true. So we'll understand in detail about it. The first initial, as he said, as Mr. Chakravarti said, कि
it is going to spike your sugar levels. Okay, the first ingredient is usually a sugar. Abhi sugar is a fast absorbing carbohydrate that is absorbed in the bloodstream very quickly and raises blood sugar. It is so concentrated, जैसे उसकी चाशनी बनाते हैं, और हम लोग जो क्वांटिटी मतलब जितना आपने वो स्वीट का कंटेंट डाला है उसका प्रपोर्शन इज इक्विवेलेंट और हाफ द प्रपोर्शन जो यूज करते हैं, उसके वजह से जो न्यूट्रिटिव वैल्यू ऑफ दैट पर्टिकुलर ग्रेन, अगर बेसन का लड्डू है तो बेसन के लड्डू में जितना बेसन यूज होता है उतना ही वो शुगर यूज होती है, और इवन हाफ थोड़ा बहुत कम होगा. ठीक है, if one katori of besan is there, the on that basis you will be getting a half katori of the sugar is used, which is तभी वो sweetness उसको cover up करने के लिए वो use होता है. तो amount of sugar is added in that is nullifying the quantity of the good quantity of the besan. Okay, I'm just giving an example. So for that reason, जो ये concentrated वाला जो sugar हो जाता है, अभी 1 gram of sugar gives you 20 calories. ठीक है, 1 gram is equals to 5 grams, अपना जो normal घर का चम्मच होता है. ठीक है, 1 teaspoon is equivalent to 5 grams. अभी आपने कटोरी भर के लिया, so it's almost approximately एक कटोरी is 30 grams. As a standard size, it's a 30 grams का कटोरी. So utna amount of sugar is directly increasing the spike of in your blood sugar levels, and therefore it is referred to as a calorie sweetener as compared to a non-calorie sweetener such as sweet and low or an equal or a splenda. ठीक है, अभी इसको कट ऑफ करने के लिए एक सबसे गोल्डन रूल है कि पोर्शन कंट्रोल करना चाहिए. ठीक है, आपने एक मीडियम साइज या स्मॉल साइज आपने, आपकी क्या है क्रेविंग्स है जो आपको कम करना है. ठीक है, जो डिजायर है उसको कम करना है. मुझे आज मीठा खाने की इच्छा हुई तो मैंने आज मीठा खाया, बट कितना खाया, सी इतना खाने से भी आपकी इच्छा पूरी हो जाती है, बट जरूरी नहीं है उसके लिए आपने 5-6 इतने बड़े बड़े लड्डू खाए तो ही आपकी इच्छा पूरी हुई, ऐसा तो नहीं होना है, राइट. सो इच्छा इज वेरी, एक प्रसाद का एक दाना is also fulfilling to your soul. Okay, so on that basis portion control is the big key to a successful managed diabetes. ठीक है, हम खाने के लिए मना नहीं करते हैं, मना कर रहे हैं कि फर्स्ट थिंग आप उसका ऑल्टरनेटिव ढूंढो. सेकेंड ऑप्शन इज आप उसका पोर्शन कंट्रोल को कंट्रोल में रखिए, लिमिट में रखिए. ठीक है, नाउ कमिंग टू the second ingredient which is most commonly used in the preparation of sweets and dessert is milk. अब ये milk जो होता है आपको वो creamy texture चाहिए. You need either a, generally we go for a whole fat milk. Okay, so that you get a creamy texture, you get a ज़्यादा softness in your final product. ठीक है, सो वो चीज के लिए जो फैट यूज होता है, मिल्क के ऊपर जो क्रीम होती है, जो मलाई होती है, उसको आइदर यू यूज एज अ कॉन्सेंट्रेटेड वन और यू यूज द होल वन. ओके, जब ये होल पूरा यूज होता है तो उसकी वजह से क्या होता है कि जो भी अपने बॉडी के अंदर इट इंक्रीजेस योर एलडीएल कोलेस्ट्रॉल, जो खराब वाला कोलेस्ट्रॉल है जो आपके इंटेस्टाइन और आपके हार्ट की आर्टरीज, वेन्स उसके ऊपर स्टिक हो जाती है, तो उसको निकालने के लिए अगेन वी नीड टू इंक्रीज योर एचडीएल, गुड कोलेस्ट्रॉल खाना होता है. तो उस ये ना हो, दैट इट मींस योर आपका बैड कोलेस्ट्रॉल नहीं इंक्रीज होना चाहिए. दैट इज व्हाई टू अवॉइड दैट फुल क्रीम वाला चीजें जो जिसमें मिल्क प्रिपरेशंस में ऐड होती है उसको रिस्ट्रिक्ट करना चाहिए. Okay, the most homemade desserts use either milk or milk products in the form of plain and sweetened yogurt. Okay, yogurt यानी दही वाला भी किसी किसी रेसिपीज में बनती है, और यू ऐड कंडेंस मिल्क, फज यूज करना, या तो खोआ यूज करना, या तो चना यूज करना, पनीर चीज
cheeses, ghee and clotted creams. However, this all products जो भी है वो whole होती है, या तो उसको प्रोसेस करके इवेपोरेटेड करके उसको कॉन्सेंट्रेटेड करते हैं, कंडेंस मिल्क यूज होता है, हाफ और फुल क्रीम can raise your blood cholesterol or contribute to heart disease. Okay, now most of the desserts or sweets are prepared by either whole milk or half and half of for rich and a creamy taste के लिए. ठीक है, तो अगर ऐसा यूज होता है तो what we can do. ठीक है, कुछ तो करना पड़ेगा ना, because it's eventually it's hampering our own body. So let us look at how we can modify desserts and some useful tips on how we can make them more healthy. आपने कभी सोचा है how can you make the desserts more healthy while you are preparing your desserts? Just give me I mean message पे और chat पे मेरे को भेजो कि आपने क्या alternative solution सोचे हैं जिसकी वजह से you can make a desserts healthy. Please write on the chat how you have thought, I mean what innovative recipes you have thought where you can make your desserts health friendly. Yes, come on. कुछ तो alternative सोचा होगा ना, खाना है आपको. Yes, use sugar-free products in desserts while preparing. Very true. और कुछ options? जैसे मैंने आपको बोला है HDL improve करना है. Yes, using millets. Yes, I've got a wonderful audience with me tonight. I'm so glad to have such a wonderful audience. Yes. Yes. Use fiber products. Wow, amazing. Okay. So first, as we say, as per your suggestion, we'll go ahead with that tip. That comes to the rating of tip number 1. Use non-calorie sweeteners in the preparation, sweets and desserts. Reduce the portion size. That's the key. If you cannot make the entire dish with non-calorie sweeteners, then use only 1/4 of the amount of sugar suggested in the recipe and substitute the rest with the non-calorie sweeteners. Okay, यहाँ पे generally बहुत confusion हो जाता है कि sugar, honey, jaggery, ठीक है, ये तीनों की caloric value, if I say the 3 caloric value of this is the same. Okay, उसकी nutritional content same है, nutritional content different है. Honey is more better, but वो अगर उसको गर्म करते हैं then again it's not as usable as viable because उसकी nutritive value कम हो जाती है. Coming to jaggery, jaggery is the best option, but उसकी caloric value अगर देखते हैं तो it's similar to the sugar की. अभी sugar मना क्यों करते हैं? As we know कि sugar अपनी Indian product नहीं है. Sugar was actually precise. If you go to the history of the sugar, sugar जो है वो when we were into ruled by the Britishers, वो time पे they were looking lot of wine, okay, because wine was needed for them उनके use के लिए. So we were in traditionally we used to use the sugar. अभी ये जो शुगर केन से जो जैगरी बनती है उसका जो मोलासेस बचता है उसमें से शुगर बनती है एंड उसमें से वाइन बनता है. तो फर्स्ट प्रोडक्ट इज वाइन एंड द अदर वेस्ट प्रोडक्ट ऑफ दैट मोलासेस इज द शुगर. ठीक है, इफ यू गो anyhow if you got a chance to visit a sugar factory, आपको वो केमिकल की
गंदी सी स्मेल आएगी, मतलब यू कांट इवन विजिट अ शुगर फैक्ट्री. आपको 10-12 you need to tie your mask, you need to wear your oxygen mask, and then only you can enter to the sugar factory. मतलब it is so much chemicalized, so much उसका जो way of preparation होता है sugar का, it's so chemicalized कि a normal person cannot go as it is in the sugar factory. Okay, now the need of the wine was so that उनका molasses इतना बढ़ गया कि वो उसका waste product से भी पैसे कमाना चाहते थे. You know how the British people used to rule us. So उन्होंने क्या किया, इतना सारा sugar उन्होंने market में product तो कर लिया, but as our tradition was, we always used to use jaggery on a day-to-day basis. Every Indian dish, if you see, or a traditional dish, is prepared of jaggery and not of sugar. So on that basis, unhone what they did, they smartly started giving sugar as a free, as a complimentary. And you know the Indian mentality, how it is. Initially, when they used to get in a free, they used to use it, grab it. They say, okay, we are getting something for the free, which is going to starve their hunger, starve their overcome their emotions, overcome their feelings of all that, raise the voice of it. And slowly and gradually they started incorporating sugar in the ration ke stores pay, where if you buy a 5 kg of rice, you used to get a 5 kg or a 10 kg of sugar. So this is how sugar was incorporated in the Indian homes. And on that basis, as and when we started using the sugar, and now it has become the trend of using the sugar. So if you see the caloric value, it is the same. So, but that is why we should avoid sugar, because it is highly processed, highly chemicalized. So it has a lot of drawbacks in our body. If you want to alternative, yes, you can use the alternative of jaggery, which is an Indian traditional good that can be used. I hope everyone is clear till now. Please type yes. Am I making sense of what you can understand? I mean, it's easy for you to understand. Say yes, yes, yes. Please type on the chat box. Okay, coming to the second top major tip is try using canola oil or a rice bran oil for frying. Now, oil-free frying or a shallow frying is better than deep frying, and using a non-stick pan usually consumes less oil. Now, oil initially, we used to use a dalda or a margarine or a very low or a cheap quality oil. Because of that, again, which I explained you earlier also, because of the fat, which is a low quality fat, it sticks to the arteries and to the heart, to the veins, and it leads to cholesterol increase in your lipid profiles. So to avoid that, first thing is to avoid the deep fried foods, or you can give an alternative is either you baked it, or you use oil sprayers, or you use just a topping of oil on it, or a shallow frying is better rather than a deep frying foods. So whatever recipes you are using, make sure that you use, first is the quality of the oil, second is the quantity of the oil that has been used in the preparations, and the third thing is find the alternative. If that particular product, instead of chakli, which is baked, which is a savory item, chakli what we say, so instead of that, if you can bake the chakli, it's good to go, right? Coming to the third, now there are recipes which you cannot use jaggery. For that, you need to prepare the syrups, sugar syrups. So for that, sugar syrups is just giving a taste of sweetness. So while consuming those sweets, you can just squeeze the
extra syrup that is available in that rasgulla or gulab jamun or any or even any sweet dish which is prepared using the syrup, okay, sugar syrup. So you can just use that, and while making the syrup only you can use the sweeteners, the artificial sweeteners that is available in the easy market, right? Now, use of low fat or a skimmed evaporated milk and unsweetened condensed milk if a recipe calls for a regular condensed milk. So that's an alternative of using a whole fat milk into a low fat skimmed milk, or a unsweetened condensed milk is an alternative for that. Now plays a very important role. That's a quiz time. Okay, so my question here goes, desserts need to be consumed as, just desserts need to be counted as a carbohydrate. True or false? Please write it on the chat box. True or false? Desserts need to be counted as a carbohydrate. Okay. Great. Okay. Some more. Come on. I know it's very tempting. Yes, the correct answer is true. So first of all, we'll write a big applause for all of the who have answered right answers. Okay, now coming to the most important tip number 5. It is also a good practice to read labels and to look for a total fat, carbohydrate, sodium, and cholesterol content while buying the product if the nutrition information is available. So always read the label. So any product, make a practice of always reading labels. Generally whenever we go to the mall, क्या देखते हैं? लिस्ट में ये चीजें हैं और उसकी एक्सपायरी डेट देखते हैं और उसका प्रोडक्शन डेट देखते हैं और प्राइस देखते हैं, बस ये ठीक हो गया, ओके, डाल दो रैक में और इन जस्ट कीप इट इन योर ट्रॉली पे डाल के. But make sure that you give another 2 minutes to read the nutritional information about how much carbohydrate is there, what is the serving size, कि आप अगर एक पीस ऑफ गुलाब जामुन अगर आप खा रहे हो तो आपको उसमें से कितनी कैलोरीज मिलने वाली है, कितना कोलेस्ट्रॉल मिलने वाला है, कितनी शुगर एडेड है, कितना उसका फैट और फैट परसेंटेजेस एडेड इन दैट. इज इट बेनिफिशियल फॉर मी, इज इट न्यूट्रिशियस फॉर मी कि मेरे ये कंडीशन पे अगर एक, फॉर एग्जांपल देयर आर वेरियस ब्रांड्स अवेलेबल इन द मार्केट कि अगर आपने, आई कैन नॉट नेम द ब्रांड्स, देयर आर वेरियस ब्रांड्स, सो हर एक ब्रांड की शुगर कंटेंट और द फैट कंटेंट अलग होती है. किसी ने आपको 25 ग्राम्स पर 1 गुलाब जामुन मिलेगा, किसी में आपको 20 मिलेगा, किसी में आपको you might get 15 also. Okay, so choose wisely कि आपके लिए कौन सा बेटर है. अगर सब में आपको 25, 30, 50, 35 पर सर्विंग मिल रहा है, so then उतना खाने से आपकी शुगर स्पाइक कितना होने वाली है. So to avoid that, instead of having a whole normal size gulab jamun or a rasgulla, you can have it half the portion of it and half you can save it for later or the other day, so that a immediate spike is not there. Coming to the 6th tip, try to eat only half or 1 piece depending on the size if the recipe is not modified. Okay, often sweets are served as a form of prasad or prasadam in place of worship. So as I suggested पहले कि आपको प्रसाद में आपको स्वीट इतनी सारी आपको थाली भर के दे दिया, so make sure that you evenly distribute, because प्रसाद है तो make sure अपने को और distribute करना है. So एक साथ पूरा स्वीट आपके लिए अगर दिया है तो I consider yes it's auspicious, भगवान का प्रसाद है, but
वो सब में बांट के खाना है. Okay, sharing is caring, right? So on that basis, एक तो आपका ये हो गया. उसके बाद next comes is कि जितना भी आपको वो sweet दिया है उसका थोड़ा सा, only 1/4 of the portion that you need to eat. ठीक है? Learning to eat smaller portion is always helpful. Okay. Coming to the relationship. Now, total carbohydrate content should be equal to or less than 15 grams for a serving. Therefore, while making a dessert that includes grains, sugar, and milk, which all are carbohydrate source, should be modified to avoid a high glycemic response. Now, अभी जैसे ये 3 ingredients तीनों भी carbohydrate से ही बने हैं. शुगर हो गया, अपना ग्रेन्स हो गया, एंड आपका ग्रेन्स में जनरली जो नॉर्मल इंडियन ग्रेन्स हैं वही यूज कर सकते हैं. तो इसका अब वी कैन व्हाट वी कैन थॉट ऑफ इज द अल्टरनेटिव इज वंस वी कैन ऐड फाइबर टू इट, वी कैन ऐड प्रोटीन्स टू इट, जैसे वे प्रोटीन्स वगैरह होते हैं, वी कैन यूज दोज प्रोडक्ट इनटू योर प्रिपरेशंस. यू कैन यूज दाल प्रिपरेशंस, जैसे प्रोटीन्स वाली जो दाल पल्सेस ग्रेन्स होते हैं, दैट कैन बी यूज्ड. Dal, pulses and legumes. Coming to grains, make sure that you incorporate millets in your preparation, your sweet preparations. Okay. Now remember to count desserts as a carbohydrate source and make appropriate adjustments in the diet and the insulin intake wherever applicable. So self-monitoring of blood glucose is recommended to keep a track of your blood sugar levels. अगर आपने शुगर खाई है तो उस हिसाब से अगर आपने if you have eat one sweets, okay, then make sure that you have checked your blood sugar levels, okay, by self monitoring blood sugar levels. Second is you need to adjust your insulin doses or your medicine doses depend upon the quantity of the meal, quantity of the dessert or a sweet or a carbohydrate that you have consumed. Okay, if it's a high before a meal, passing the desserts may be a good idea. Okay, so make sure that you have a check before you consume any sweets. Before and after both is recommended. The reason is before, अगर आपने बहुत heavy, generally sweets जो होती है वो आप dinner के बाद या lunch के बाद और a major meal करने के बाद last में you have a sweets. So the best option or a best time is to have in between your meals or along with your any protein snack item के साथ, so that it does not spike immediately. Okay, or to avoid at that point of time. Second option, what you can think about is by incorporating good amount of protein first, and then you can have is your normal, the sweets in that. Okay, why after that? Because the major thing is, for example, for Mr. Dr. Arvind Kumar, if he has one gulab jamun, his sugar spikes. Okay, and it spikes to more than say more than 250, more than a normal range. Okay, but at the same time, if he eats besan ka laddu, the spike is on the lesser side. So there we say there is some sensitivity of certain food items in the preparation which reacts on an individual basis. But every body composition is different. So on that basis, सबकी spike of sugar, सबकी sweetness के ऊपर या sweet desserts जो बने हुए हैं उसके ऊपर spike different होती है. So you should know कि आपको क्या खाने से आपकी sugar spike बढ़ती है. So before and after check is always important. Coming to the next point. Now let us understand carbohydrate loading. ये बहुत ही simple चीज है. आपने feasting कर ली, okay, और उसमें आपने सब खाया, रोटी, सब्जी, दाल, चावल, सब्जी में भी you ate potato का सब्जी, you ate whole fill
3 of chapatis along with the rice, along with you ate one sweet also. So ये जितना भी meals आपने consume किया है उसमें से 50 to 55% is your carbohydrate. Okay, protein में भी carbohydrate होता है. So carbohydrate is available in all the meals. ठीक है. और आपने जैसे भगत ताराचन हो गया या any major meals, मालवन की थाली हो गई या any पूरी थाली जो आपने पूरी खाई, it's like a feasting of the whole meal. ठीक है. उसमें जो कार्बोहाइड्रेट लोड होता है उससे क्या होता है कि आपने वो लंच के लिए आपने कंज्यूम कर लिया, वो उतना सारा एक साथ खाना खाने से आपकी बॉडी के ऊपर बहुत सारा कार्बोहाइड्रेट का वजन आ गया. ऑन दैट बेसिस आपकी शुगर जो है वो बहुत ज्यादा स्पाइक करती रहेगी. ठीक है. तो वो डायरेक्टली आपको इन्फ्लुएंस करेगी आपके ब्लड शुगर के ऊपर. देयरफॉर स्पेसिंग ऑफ द मील्स, मतलब ये पूरा खाने में यू नीड टू स्पेस आउट. ये लार्जर मील्स खाने से बेटर है. यू शुड स्प्लिट योर मील्स इनटू 6 डिफरेंट टाइप्स में. ठीक है. आप मील्स को स्प्लिट कैसे कर सकते हैं कि एक बड़ा मील खाने से बेटर है कि आप उसको 3 पोर्शंस में 3 मेजर मील्स करके उसकी जगह पे 6 मील्स कर दीजिए. ओके, सो दैट you there is no spike and there is no carbohydrate loading in it. ठीक है. फॉर एग्जाम्पल अगर आप को सिंपल लैंग्वेज में बोलूं, एक ट्रक जा रही है, वो ट्रक में आपकी कैपेसिटी इज ओनली 50 kgs का वेट उठाने के लिए. बट आपने बोला कि नहीं नहीं ये तो एक 1 किलोमीटर जितना ही जाना है, तो लेट मी एड 70 kgs on it and let me travel to 1 kilometers only. Okay, फिर बॉडी बोलेगा कि 70 नहीं, लेट मी एड 1 मोर, आई मीन लेट मी एड 20 मोर. सो हो गया 90 kg की कैपेसिटी, बिकॉज यही तो जाना है, इट्स ओनली अ किलोमीटर. So on that basis, that 90 kg weight, that truck won't be able to handle it. So what happens? First thing, what will happen to that truck? First, the tire will blast. Second option is anyhow it will reach there, but again it will end up like पूरा वहां पहुंचते हैं it will try to give up everything कि बस हो गया, I'm not going to tolerate it now anymore. It's going to that way. So the load which the truck is carrying is going to be a very heavy for your body to assimilate in your blood glucose levels. उसको बाहर निकालना भी है, उसको सिंथेसाइज भी करना है. सो उसके ऊपर इतना प्रेशर मत डालो कि आपने अभी पूरा आज खाना है, होल फैमिली इज देयर, तो आपने फुल मील खा लिया, ऑन टॉप ऑफ इट आप उसको डेजर्ट्स भी दे रहे हैं, आप ऑन टॉप ऑफ इट यू वांट टू कंप्लीट विद सम फ्राइड आइटम्स आल्सो, फ्राइड स्नैक्स भी आ गया, फ्राइड पापड़ भी आ गया. सो व्हाट हैपेंस, ये पूरा एंड अप हो जाएगा, वो 90 kgs का लोड आ जाएगा on the simple small organ of your abdomen, of your pancreas, of your liver वगैरह, और उन बिचारों के ऊपर लोड आ गया, and eventually they won't able to function properly and it will lead to spike. Okay, now let us understand with a simple example. Okay, now in general it is recommended that carbohydrate can be limited only to 3 to 4 servings per meal. For example, 1 roti plus half cup dal plus half cup yogurt is 3 carbohydrate choices. Okay, so if you add 1/3 cup cooked rice to your meal, then it becomes 4 carbohydrate. Besides, it leaves no room for desserts. But if desserts were to be included, then plan accordingly so that your carbohydrate can be omitted from the main meal. This way, the discomfort from overeating a high carbohydrate and a fat loaded meal can be avoided. ठीक है. एक एग्जाम्पल देती हूँ आपको. रोटी सब्जी रोटी दाल और योगर्ट, आपको वो तीनों चीजें खानी है. ठीक है. बट आपको साथ में चावल भी खाना है, तो आपकी वो ऑलरेडी वो 4 सर्विंग्स तो हो ही चुकी है. ठीक है. प्लस ऑन टॉप ऑफ इट यू वांट टू ऐड द डेजर्ट भी. तो आप प्लान ऐसे करो कि इसमें से आपने 2 कट कर ली, तो यू कैन ऐड 1 डेजर्ट टू इट. सो दैट मीन्स 1 डेजर्ट इज देयर एंड 2 थिंग्स.
portion of your meal is of carbohydrate. So on that you can relish your desserts also. और वो load नहीं जाएगा. ठीक है? Coming to the next most important is the quiz time. When you decide to indulge in dessert, what will you ask yourself first? A. Is the dessert high in nutrition value? B. Am I taking a small serving? C. What will be my carbohydrate count if I add this as a serving? And the D option, all of the above. Yes. Come on everyone on the chat please. जब आप डेजर्ट आपने सोचा है कि आपको खाना है तो पहले आप क्या सोचोगे? What will be your thought? Yes, come on, some more. I need all the members. Yes. Yes, come on, come on. So it should be a mindful eating. Yes, come on. Yes. Some more? Yes. So everyone has got a right answer. The correct answer is D, all of the above. So remember, the bottom line is to monitor carbohydrate content in a meal and to avoid carbohydrate loading. Portion will still have to be controlled and should be the use of fat, sugar and milk. Sab khao, but sabar se khao. That's the key thing. And for your personalized diet plan, please reach out to our health coaches. These are the testimonials which we have received. And thanks everyone for these wonderful testimonials. And thanks a lot for the wonderful audience. So, any questions for me? Hi, Meenal. Thank you so much. I think this was a great understanding of how to make all your desserts diabetes friendly. Thank you so much. I think all our audience was sticked and glued to the session. It was Yeah, amazing. I think for all of us, it is very important if you can give us an overview of everything you discussed in a summary in Hindi, because we have very users yeah. जिनको इंग्लिश का थोड़ा कंसर्न हो सकता है. तो अगर आप एक हिंदी में ओवरव्यू दे दे, एक समराइजेशन कि क्या क्या आज हमने डिस्कस किया. Okay. So सबसे पहले first thing is आपको जो शुगर का ऑल्टरनेटिव ढूंढना है. जैगरी वाली स्वीट्स भी आप ले सकते हैं, बट पोर्शन कंट्रोल इज ऑलवेज द की. पोर्शन में एक छोटा सा प्रसाद भी खा लिया तो भी आपका कंटेंट, आपका वो फुलफिलमेंट हो जाता है कि हाँ मैंने मिठाई खाई है. उसमें भी खुश रहना है, थोड़े में भी खुश रहना सीखना है अपने को. ठीक है. दूसरी चीज हो गई, आप उसका बेटर ऑल्टरनेटिव यूज कर सकते हैं. बहुत सारा प्रोटीन उसमें ऐड कर सकते हैं वेरियस वेज से, ड्राई फ्रूट्स ऐड करके, आलमंड्स, वॉलनट्स, डेट्स वगैरह वो सब चीजें ऐड करके आप उसको आपकी स्वीट्स जो है वो और ज्यादा डिलीशियस बना सकते हैं. कार्बोहाइड्रेट लोडिंग एक साथ पूरा खाना नहीं खाना है, फीस्टिंग नहीं करनी है. उसमें आप 3 मील के जगह पे आपको 6 मील में डिवाइड करना है और लेना है. बहुत सारा मील में कार्बोहाइड्रेट कंज्यूम नहीं करना है. अगर आपको स्वीट खानी है तो साथ में आपको पहले से प्लान करके रखना है
ताकि आप कार्बोहाइड्रेट की रोटी या कम कर ले, या चावल उस दिन स्किप कर ले, या कोई भी दूसरा कार्बोहाइड्रेट, पोटैटो की सब्जी, आलू की सब्जी, वो कट ऑफ कर सकते हैं। और उसके जगह पे यू कैन इनकॉर्पोरेट स्वीट, उसमें डाल के आप आपकी स्वीट और दिवाली रिलीश कर सकते हैं। Okay, thank you so much, Meenal, for this information in Hindi. Yeah. Uh, कुछ कुछ यूजर्स है आई एम श्योर हु वांट टू नो कि दिवाली में कैसे है ना, व्हेन यू गो टू विजिट other people's home, your family members, your friends, ideally people cannot say no, or when there is a common feast which is given, you need to have it because you're a part of that family function or that Diwali celebration. So अगर उन्होंने खा भी लिया है कभी ज्यादा है, थोड़ा ऊपर नीचे हो भी गया है, तो how can they cover up on times when they have not controlled their meals? ओके, सो फर्स्ट थिंग इज, पहले तो अगर आपने वहां गए हैं, ठीक है, पहले तो आपका पूरा खाना प्रोटीन वाला ले लीजिए। सो यू कैन हैव अ दाल, यू कैन हैव अ स्प्राउट्स, यू कैन हैव द मेजर मील्स कंजम्पशन कर लो। उसके बाद वॉट एवर द क्वांटिटी ऑफ द स्वीट इज देयर, उसको कट ऑफ करके एंड शेयर इट विथ योर नियर एंड डियर वंस। ओके, उससे क्या होगा, एक तो आपका में प्यार, मीठा वाला प्यार शेयरिंग से बढ़ जाएगा, आपका क्वांटिटी ऑफ द स्वीट इज गोइंग टू बी रिड्यूस्ड इमीडिएटली। So that way you can use your you know in day to day basis, या day to day basis पे भी आप ऐसे कर सकते हैं। and even when you go for the festival seasons पे आपके relatives के घर पे, वो time पे you can do the same thing. Okay, helpful, Meenal. Ashok ji, happy Diwali. Ashok ji has a question, Meenal. Sugar-free tablets क्या spike देते हैं? Do they cause spike in blood sugar levels? And after how much time of taking a sweet dish should a user check his blood sugar levels? Okay, so there's always, I'll answer first one. So sugar free tablets में भी spike होता है, but which is very less. Okay, डिपेंड अपॉन ये एवरी बॉडी के हिसाब से वो अलग अलग स्पाइक होता है। जैसे मैंने आपको पहले बताया कि किसी किसी को फॉर एग्जांपल रसगुल्ले से बहुत ज्यादा स्पाइक हो जाता है, किसी को नहीं होता है, तो यू नीड टू चेक कि वो शुगर फ्री होके भी आपकी बॉडी में कितना स्पाइक होता है, बिकॉज एवरी बॉडी का मेटाबॉलिज्म इज डिफरेंट। सो यस, शुगर फ्री से भी स्पाइक होता है, बट ऑन अ वेरी लेसर नोट पे, बहुत कम स्पाइक होता है। एंड दैट टू डिपेंड्स अपॉन केस टू केस, एवरी बॉडी का डिफरेंट मेटाबॉलिज्म के ऊपर डिफरेंट होता है। सेकेंड क्वेश्चन का आंसर है, and how much time after taking a sweet dish should we check on our sugar? It's always a thumb rule कि खाना खाने के 2 घंटे बाद आपको चेक करना होता है आपका शुगर लेवल्स। Okay, I think Mr. Ashok, we helped you. I, with my team, helped you answer your questions for today's session. Let's move ahead, Meenal. I think many of our users are very passionate about having sweets, क्योंकि काफी लंबे समय से उनका जो sweet intake है, वो कम हो गया है. They are told by their doctors, nurses, people around, family members, ये मत खाओ, ये मीठा मत खाओ, इसमें sugar मत डालो. So Diwali is the time when everyone wants to, just indulge a little bit. They don't look out for their diet. So ऐसे टाइम पे क्या ज्यादा एक्सरसाइज करके या और कुछ ऑल्टरनेटिव से वो पूरा फुल फ्लेज्ड दिवाली एंजॉय कर सकते हैं विद स्वीट्स विद एवरीथिंग, and can, if they do anything else, will that help? ओके, सो कमिंग टू द फर्स्ट थिंग कि आप स्वीट्स क्वांटिटी इज द की इन थिंग, ठीक है, क्वांटिटी में खाना वो तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। सेकेंड पॉइंट इज आप एक्सरसाइज करना है, यू नीड टू जितना भी फूड आपने खाया है, जनरली दिवाली के टाइम या फेस्टिवल के टाइम पे एक्सरसाइज मिस्ड आउट हो जाता है, बट मेक श्योर आप अपना रूटीन ऐसे सेट करो कि आपका एक्सरसाइज हो जाने के बाद देन यू स्टार्ट योर डे विद इट, और इवनिंग में आपका डिनर वगैरह हो जाने के बाद इंस्टेड ऑफ सिटिंग, व्हाई डोंट यू जस्ट स्ट्रोल अराउंड। ओके, जैसे बातें करते करते गप्पे लगाते लगाते बैठने से बेटर है यू जस्ट स्ट्रोल अराउंड।
That's the second thing. Make sure that you hydrate yourself, क्योंकि ये भी बहुत important है, क्योंकि ज्यादातर ये सब खाने के बाद पानी पीने की भी जगह नहीं होती है, because we do lot of fast feasting वाला situation create हो जाता है, बोलते हैं ना पानी तक नहीं पी पाते. So make sure that you hydrate yourself well. ठीक है. Second thing is managing your sugar levels. You need to manage your insulin as well as your medicines that you are consuming. ओके. सो अगर आपने इतना कार्बोहाइड्रेट या इतना लोड्स खाया है, सो यू नीड टू एडजस्ट योर डोजेस ऑफ योर मेडिसिन और योर इंसुलिन, सो दैट there should be no spike in your sugar levels. Okay, for that you need to contact your doctors and your healthcare professionals, jo health coaches who can guide you for the same. So managing is easy. Only thing is the golden rule has to be followed. Also, the most important, sleep also plays a very important role. सब मिले हैं गप्पे लगाने, यू कीप ऑन बातें करना शुरू हो गया, फैमिली गैदरिंग हो जाती है, तो यू अवॉइड स्लीपिंग, और या स्लीप आपकी डिस्टर्ब हो जाती है. सो मेक श्योर कि आपका जो टाइम है ऑफ योर स्लीपिंग, योर वेकअप टाइम एंड योर स्लीप टाइम, बेड टाइम, वो आप स्टैग्नेंट रखिए. ठीक है. वो अगर स्टैग्नेंट रहेगा तो थ्रू आउट द डे it is going to useful. You're going to use maximum of the time that is available in your hand. Okay, don't stretch your sleep. Sleep को compromise नहीं करना है. And the most important, quantity. That's the key. Yes. I think that was amazing information. Thank you, Meenal, for sharing that. One of our users, Sanjeev ji, thank you so much. Happy Diwali for being so active in the program. Sanjeev ji wants to know, Meenal, that if he adds 1/3 teaspoon of sugar in a cup of tea every single day, will that increase his blood sugar level or increase his average or HbA1c or his day-to-day blood sugar readings? Uh, if we add 1/3 of the spoon of the sugar in, yes, it is going to increase the, it's not going to spike, but overall HbA1c, yes, it affects. थोड़ा थोड़ा बूंद बूंद से सागर बनता है. So even for that, थोड़ा थोड़ा sugar everyday consumption into 365 days is equivalent to your HbA1c raise in that. So just to highlight, are you saying he should have, he should not have, or how He he should should have? not have. बिल्कुल भी नहीं लेना Before है that, या कैसे? before that, see, I don't know आपका क्या अभी sugar levels वगैरह है. So I think इसका answer आपके health coaches would be better to guide you for that. And depend आप वो time पे if you're adding in your tea, उसके साथ आप क्या ले रहे हो, that is also most important thing. और throughout the day plan में आपका क्या है. So it's, I think your health coach would guide you better for this answer. Just one thing, Meenal, he has dropped his HbA1c, which is 6.2. So you can maybe help based on that. Okay, so yes, or if your HbA1c is 6.2, yes, you can have 1/3 of the spoon. Okay, great. I think we have few more questions. Let's address them. There is a user who has joined us today for the first time, and he's saying saccharine, if used as sugar free, is it advisable? Can it be taken? If yes, what quantities and what duration? Saccharine as a sugar free. Yes. Okay, so FDA has given us certain standards that can be used. So again, quantity is important. So 5 to 10 grams a day is more than enough for a use per day basis. Not more than that. Okay, I think that helps. And with this, we complete all our questions for today. I think it was an amazing time understanding desserts from you, Meenal. Thank you so much. For all our lovely AccuCheck Wealthy family, happy Diwali once again.
love, light, happiness, and good health is what all we as your AccuCheck Wellbe wish for you. If you have not yet upgraded your plans, if you have not yet renewed your membership, good news, we are running some Diwali discounts because we have to close this functional year 2022. We have bought all the programs at a flat 50% off. Please speak to your health coach to know what all does these programs have, what all is available as a part of the program. Don't miss out on such amazing offers. If you are about to finish your programs in a month, 2 months, 3 months, this is the best time to go for it. Till then, take care of your health. Love, light, happiness, and good health to all our AccuCheck Wealthy family. Happy Diwali. See you Happy all next Diwali to all. week.